points to close at 14,281. So a big thumbs up from the stock market. We are also joined now by Mr. Tarun Bajaj, the Economic Affairs Secretary. Mr. Bajaj, as we just read out about the stock markets, a huge welcome, a big spurt of more than 2,300 points. So would you say that corporate India has in the real sense welcomed the budget? I think so. Not only the corporate sector, Yeah. not only the corporate sector, but every sector has welcomed the budget. And if you look at the budget, I'm sure Secretary Expenditure must have told you our emphasis on capital expenditure, which has happened. Yeah. Along with that, I think a very amazing thing, which I've also not seen in my more than 30 years of life, that when we were facing COVID, our Prime Minister was actually thinking about reforms, and we continued with that flurry of reforms even during that difficult period. And if you look at the budget speech of the FM today, so you will see that those reforms actually continue, and there are a large number of reforms that are touching the capital market, the financial market, and the basic structure, and which were long overdue. So I think every sector should be happy about it, and now the challenge for us is to implement it, and we are working towards that as well. मिस्टर बजाज, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि सरकार ने चुनौतियों को अवसर के रूप में बदल दिया, तो क्या इसके पीछे का जो कारण है, मैं वो जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये चुनौतियों को सही समय पे उनका आकलन किया गया और उनको किस तरह से अवसरों में बदला जा सकता है, और किस तरह से सरकार ने एक पूरी रोड मैप या परिभाषा बनाई कि हमको इस तरीके से चलना है जिस तरह की ये हमारे अंतिम लक्ष्य हैं और जिनको हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं पिछला एक साल देखूं कि किस तरह से हमने बिताया अपनी पॉलिसीज़ को लेके, तो एक तरफ जब कोविड ने हमें हिट किया तो हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट था, लोगों की लाइव्स बहुत इम्पोर्टेंट थी, लोगों की लाइवलीहुड्स बहुत इम्पोर्टेंट थी, और एक बजट जो फरवरी में आया था पिछले वर्ष, उसके इमीडिएटली बाद लगभग 4 से 5 बजट, मिनी बजट, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि हम वो 4 से 5 मिनी बजट भी लेके आए और उसको काफ़ी हमने बढ़ोतरी दी। इसके साथ साथ जो रिफॉर्म्स की बात मैंने की, उस पर भी ध्यान था। प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा कहते थे कि ठीक है, हमें इस चीज़ पर एम्फेसाइज करना है, लेकिन जो आपका मेन लक्ष्य है उसको नहीं भूलना चाहिए, और हम अपने रिफॉर्म्स के रास्ते पर चलते रहे। और मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में, जैसे कि अभी सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर कह रहे थे कि जो एक्सपेंडिचर हमने हेल्थ पर और इमरजेंसीज पे किया, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी और हम बाकी चीज़ों पे एम्फेसाइज कर पाएंगे, और जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को देंगे। Mr. Pandey, from your perspective, tell us what is the highlight of today's budget? What I think is that the growth. That means how to bring growth and employment back to the economy after a deep pandemic. So जो एक growth path जो इस बजट ने दिखाया है, जिसमें कि एक नई, जैसे तरुण जी ने मेंशन किया रिफॉर्म्स का, तो उसी तरह से एक, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस की है, इट्स ऑल्सो सिग्नलिंग अ डायरेक्शनल शिफ्ट इन द इकोनॉमी, द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, whereas certain businesses which have been so far been in the hands of public sector might go to the private sector in future, which may result in higher, which will result in higher productivity, higher efficiency, growth and employment. So going forward, there is a big, over a period of 4 to 5 years, the structure of the economy is going to change. And that is what has been reflected by Honorable Finance Minister in her speech today. Yeah. Earlier we were, talking about this entire concept that, it's always said that the business of government is not to be in business. So is the government, seriously taking forward that philosophy where we, today the finance minister spoke about IPO of LIC and also, disinvestment target in other companies? I think she has mentioned, actually, she has even named the companies for which the transactions have moved forward. Yeah.
Had it not been for COVID, probably these transactions would have been completed. Okay. So probably we will have a little bit of a spillover, but definitely 21, 22, she named the transaction that will be completed. But Air India could not be completed. Like it's Air facing India difficult- would be completed also in 21, 22. Yeah. And definitely, because we are trying to do it, close it before March, but it could spill over to April or May in the first quarter. Right. सरकार किस तरीके से सामंजस्य बिठाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सार्वजनिक लोक हित के मामलों से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिए उसको आम जन को बाजार के भरोसे भी नहीं छोड़ सकती। और कुछ ऐसी चीज़ें, जिस तरह से आपने भी बात करी, जिस तरह से मेरे सहयोगी रंगा ने भी कहा, एलआईसी को के मामले को दूर तक लेके जाना, क्या ऐसा नहीं लगता कि जो, चूंकि हमने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि बीमा का मतलब एलआईसी, भारत में एक ऐसी मानसिकता थी कि बीमा का मतलब ही एलआईसी है। इस स्थिति में अगर हम उसका विनिवेश करते हैं तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं हम इसमें आमजन की भूमिका को बढ़ाएंगे, या कहीं ना कहीं क्योंकि इसके दूसरे लक्ष्य भी रहते हैं या दूसरी बातें भी इसके हिसाब से लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अपने एसेट्स को बेच रही है, किस तरह से इसको एक परिलक्षित करेंगे, किस तरह से इसको बताएंगे आप? देखिए, दो तरह के लक्ष्य हैं विनिवेश में। एक तो ये कि जिसमें प्राइवेटाइजेशन, जिसमें मैनेजमेंट कंट्रोल पास होता है। दूसरा ये कि जिसमें पब्लिक की भागीदारी बढ़ाई जाती है। तो एलआईसी का जो विनिवेश है, बहुत क्लियरली वो उसको उसमें सरकार के ही कंट्रोल में रहते हुए उसको कैसे पब्लिक में उसकी भागीदारी बढ़ाई जाए। और जो एलआईसी की जो अमेंडमेंट्स अभी लाई गई हैं, उसमें भी ये प्राविधान है कि इवन पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी कुछ शेयर्स के लिए जो आईपीओ आएगा उसमें कुछ रिजर्वेशन होगा। तो यानी कि पॉलिसी होल्डर्स की चिंता करते हुए उनको भी शेयर होल्डर बनाना उसमें, तो उसका पर्पस ये है। मतलब एक LIC बीमा धारक IPO जो है वो शेयर धारक भी हो जाएगा, शेयर धारक भी हो जाए, और चूंकि उसके हित पूरी तरह सुरक्षित रहे, ये भरोसा कायम करने की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जो शायद आमतौर पे कहीं ना कहीं खबरों के बीच में ये खबर दब सी जाती और थी। उसको मार्केट डिसिप्लिन में लाना, क्योंकि मार्केट डिसिप्लिन जब होगा तो उसमें जो पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है उसमें और भी वो अच्छी तरह से विनिवेश हो, इसके बारे में ट्रांसपेरेंटली उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि अभी शायद क्योंकि वो मार्केट में नहीं है इसलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। Yeah. Mr. Somnathan, let's also talk about spending with respect to the social sectors and also health. What can we expect if we were to talk about health first? Can we see a perceptible change in primary, secondary, and tertiary healthcare, not only in big cities and tier 2, tier 3 cities, and also in small villages and at the block level? Yes, actually, the one of the announcements that was made in today's budget is the Pradhan Mantri Atmanirbhar Bharat Swasthya Yojana. Swasthya, yeah. Now, the honorable minister had read out some of the key elements of that package, Yeah. and I think it maybe I should just repeat some of them. So actually, this is a package that goes from the primary health center up to the apex research institutions in the country. So it intends to support 17,788 rural and 11,000 urban health and wellness centers. So these are basically primary health centers at the grassroots level. But what it also intends to do is to strengthen the national center. I'm just giving examples. I'm not reading out the Right. whole thing. National Center for Disease Control, which has 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units. So, and it also involves creating public health units in every airport and seaport. So it is a comprehensive package which starts at the grassroots level, both rural and urban, and takes it up to the highest national levels of research into virology and all other subjects dealing with infectious diseases. So it's a very comprehensive package. It's a centrally sponsored scheme where states will also join in. Yeah. So it is, I think, something that will keep us much better prepared, not only for this health emergency that we have faced, but for Yeah. future emergencies which may not be of this type. Right. Which may not be an infectious disease, it could be some other type of Yeah. emergency. Yeah. As But somebody even said, at should this not prepare for juncture- the last war, we have to prepare for the next war. Exactly. And that is why we are spending more of the increased health budget on things like drinking water, sanitation, Okay. which are the diseases that we face in normal years. Malaria, dengue, diarrhea. These are the big killers in India, That's and which we need to get out of in a non-COVID year. So Okay. once we get out of COVID with the vaccine and all the steps that have been taken, there are other health priorities. So it's a Right. holistic package that addresses COVID but also addresses health in a normal year.
That's true. Like not only COVID, we have other issues like bird flu or H1N1 and although thankfully they did not progress much, but still these threats are there. But Mr. Somnathan, despite so much of focus from the central government, from each of the states and all, why health somehow in the, till say a couple of years back could not progress much well, especially the government sector health centers, whether we call them primary health center in a village or a block level hospital. Why was that, despite so much of pumping in of money? First of all, I think, look, for our stage of development, we do have financial constraints. It's a fact. Okay. And it's not, all states are not necessarily not doing well in the primary healthcare system. Some of the states like Kerala, Tamil Nadu, they have very good primary healthcare at the local level at a very low cost. Okay. So India is actually good at providing healthcare at a very low. Our medicines are cheaper. Our generics are the global leaders. So we actually have a cost advantage also. And I think that partly the fact is that we have not given it too much priority because we have been focusing on other aspects of need. But starting with the Prime Minister's announcement of the Jan Arogya Yojana, which is the PMJ, we have actually ramped up the focus on health substantially. And today, crores of Indians have access to healthcare, not only in a government hospital, but even in a private hospital, even if they are poor. Okay. And that is the result of this Jan Arogya Yojana. So actually, it has changed. There has been a decisive shift, and what we have announced today will further take that shift. Right. And Mr. Bajaj, let's also talk about FDI with one specific sector, the insurance sector, from 49 to 74%. Can we expect the private companies to usher in this kind of a change in the holding pattern and bring in FDI in a big way? Yes, I think insurance sector is the least penetrated in our country. The penetration is very low and it needs a lot of capital for it to grow further. So I think this 49 to 74% would definitely help the insurance sector. And this was also a demand from the insurance sector, especially the players who have come up and set up joint ventures with Indian partners, that because of low capacity or less capacity with the domestic partner, they wanted to bring in more capital. So this would definitely help the insurance sector to a great extent. And while we have extended the FDI from 49 to 74%, I would also, through you, like to assure your listeners that the policyholders' money is safe. Okay. It is actually regulated by Insurance Regulatory Development Authority. So where money can be invested, how money can be invested, what extent the money can be invested of the policyholders is actually a decision is taken by IRD, and the companies have to actually comply with those conditions. So their money is actually safe. So I would say that this is a very nice, good policy that was waiting for many years to come. And finally it has come, and I'm sure it will get us a lot of capital. Earlier also, when the sector was opened up, it got more than 20,000 crores. Okay. So we should expect a lot more money coming in. But Mr. Bajaj, I'm sure you will agree with me that, it's been, since the advent of IRDA and opening up of the insurance sector, it's been 2 decades now. But given our demographics, people in our country, they don't go suo moto for taking insurance policies. And still, penetration is much, much less, especially in tier 2, tier 3 cities and rural areas, isn't it? And even if they want to take a policy, they want to go with the government, the LIC, and not with the private sector insurance companies. What you say is right, and I think that is one of the reasons, and it gives an answer to your question itself, that you need money for these companies actually to open up offices in tier 2, tier 3 cities and reach out to people through agents. And because insurance is an intangible product. Means, how would you explain insurance to a villager who is semi-literate, say, for example? But if you look, the agriculture insurance has actually picked up a lot. So a large number of people are now actually getting their crops insured. So I think, and as you said, LIC was actually 100%. Now it is, I think, almost 70-75%. So a lot of market share has actually been taken by the private sector. Yeah. So we are seeing a lot of progress there. Mr. Pandey, if I can put that question to you about the insurance sector, will you
will you agree to this thing that still, despite 2 decades, LIC is still the market leader, and for the foreseeable future will still be, and private sector, most of them, all these joint ventures and double barrel names will have to struggle in the insurance sector? No, I mean, LIC has grown and will continue to have good market share, and it's also competing with the private players, and the IPO of LIC would only make it smarter. Yeah. So LIC will become, I think, smarter going forward, and the general public will only be happy if there is a lot of competition, if you have a lot of products, if you have a lot of things to choose from. So therefore, it's more the merrier. But as Tarun has rightly mentioned, that there is insurance sector is still under penetrated in India, and we have long way to go. Right. Mr. Pandey and Mr. Somanathan, before we let you go, and Mr. Somanathan, especially to you, talking about the fiscal deficit, 9.5% for the current year and 6.8% for the next year. So almost a reduction of say 50%, 40, 45, 50%. Will that, bring down government expenditure in a big way? Can we look at from that perspective? No. If you see, the expenditure numbers for next year are slightly higher than the expenditure numbers in the revised estimates for this year. So there is actually no planned reduction. Right. It is a moderate increase, but the change in the composition of the expenditure from largely relief-oriented to a bigger push towards infrastructure. But otherwise, the aggregate level of expenditure is actually going up slightly between 2020-21 revised estimates and 2021-22 budget estimate. So in spite of the reduction in the deficit is coming from the receipt side. Okay. It's not through an expenditure compression. Yeah. The Financial Responsibility, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, what will happen to that? For many years we have seen every year we give it a go by, No, I think we are into some very special circumstances in this year and the years to go No ahead. to opinion, that's true. So basically, and we have also given a glide path that we'll be moving from 9.5 to 4.5% by 25-26. And the finance minister in her budget speech has said that the present FRBM, which mandated us to go to 3% in March 21, will no longer be possible, and she would be coming up with an amendment to the FRBM Act. So I think when that act comes, we will actually lay down our policy as transparently as we have laid down in this budget, our numbers, as to how we will reach the targets that we set ourselves in the FRBM. Right. So, gentlemen, thank you so much for joining us in this segment of our special program on the budget. Mr. T.V. Somanathan, Tuin Pandey, and Mr. Tarun Bajaj, thank you so much for joining us in the program. Thank you. And listeners, you are tuned in to this special program on the budget, where we are focusing on the fine print, the nitty-gritties of today's budget announcement. Big announcements being made, the hopes and aspirations of crores of people of this country. And today's budget announcements had probably been able to live up to that expectations. Whether you talk about the common man or the corporate India, they are all, all somewhat happy that, the provisions of the budget which has been announced has been in tune with what was expected. And now in the studios, we are joined by Mr. P.C. Modi, the chairman of the Central Board of Direct Taxes. And we also have with us Shri Ajit Kumar, the chairman of CBIC. Gentlemen, welcome to the program. Thank you. Mr. Modi, if I can begin with you. It's often said that no news is good news. So in that sense, people were probably expecting a huge burden from the taxation point of view, that whatever you might call it, a COVID tax or cess or anything, but surprisingly, there was no new additional burden on the tax front. Certainly. What would you say? Certainly, I think that fear of the taxpayers was misplaced, I suppose. Unpleasantly so. And pleasantly so. But what is more important is that despite the pandemic and despite the difficult times, an effort has been to kind of provide a much efficient and effective tax administration, something which the taxpayer feels motivated
to discharge his tax obligations voluntarily. Yeah. मिस्टर मोदी, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो टैक्स पेयर थे, जो करदाता थे, उनकी उस मंशा को भांपा और उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी कि जो करदाता है उसको हमेशा जो शक की नज़रों से देखा जाता है, ये करदाता अपने आप को कहीं ना कहीं बैकफुट पे पाता था। वो डर को दूर करने के लिए सरकार कई कदम आगे आके उसको डर को दूर किया और एक मित्रता का हाथ उसकी तरफ बढ़ाया कि आप डरिए मत, आप अगर सही हैं तो निश्चित तौर पे सरकार आपके पूरी तरह साथ है। ये भावना कहीं ना कहीं शायद धूमिल सी थी। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। हमने उसी भावना के साथ में ये काम किया और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम, आई मीन से उस चीज़ को क्रियान्वित करने में और उसको मूर्त रूप देने में हमने बहुत प्रयास किया और उसी प्रयास में हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग भी किया। फेसलेस चाहते ये हैं कि जो करदाता आज तक ऑफिस के धक्के खाता था या इधर से उधर घूमता था और उसको कोई उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिखाई देता था, हम चाहते हैं कि वो टैक्स पेयर को जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें जिससे कि वो प्रेरित हो और स्वतः ही अपना कर निर्धारण करे और सरकार को के खाते में कर जमा कराए और बिल्कुल निर्भीक हो गए, कहीं ना कहीं किसी डर की भावना से नहीं, क्योंकि करदाता कहीं ना कहीं ऐसा सोचता था कि उसके मन में एक भय होता था और उसकी वजह से करना जमा कराए, खुश होकर अपना कर जमा कराए। क्योंकि दो तीन चीज़ें जो विभाग ने भी करी कि जो भी एक ईमानदार करदाता होते थे, आपने उनको सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी का एक छोटा सा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक के मानस को जताता भी था कि सरकार आप पे कितना भरोसा करती है, आपका जो कर आप जो जमा करा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मान्यता भी प्रदान करती है। जैसा कि मैं उदाहरण दूंगा, अभी फिलहाल एक टैक्स फाइलिंग सीजन अभी गया है जी, और एक मुहिम चलाई थी कि करदाता अपने आप को एक प्राउड टैक्स फाइलर महसूस करे और वो बैज एक जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, बट वैसे अगर देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी कीमत है जी। मतलब वो बैज लगा के वो गौरवान्वित महसूस करता है कि लाइक मैंने कुछ अच्छा काम किया है। हम वही चाहते हैं, बट साथ ही साथ में एक निवेदन और करना चाहूँगा कि इन करदाताओं को पूर्णतः सुविधा देना हमारा फ़र्ज़ है, बट साथ ही साथ में जो लोग फेंस सिटर्स हैं या जो कि इस दायरे के बाहर हैं उनको भी पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और एक अपने दूसरे विभागों से जो है समन्वय बिठा के, जी, जैसे सीबीआईसी और सीबीडीटी के बीच में अब आज एक अच्छा कोहेसिव एटमॉस्फेयर बन गया है जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बड़े सरल और आसान तरीके से होती है और ऑलमोस्ट रियल टाइम तरीके से होती है। राइट Right. And Mr. Ajit Kumar, from the taxation perspective, how do you see today's budget? I think it's a very positive and a very growth-oriented budget. We are taking forward the Prime Minister's call for Atmanirbhar Bharat. What we are trying to ensure is that our industry, which had suffered a bit during this pandemic time, we try to protect those factories or industries where we can start manufacturing value-added products. Okay. So instead of allowing imports of finished products or parts to come in, we have tried to raise duty on those where our own small sector MSMEs are capable of manufacturing these goods, so that due to this protection, they start manufacturing these goods within India. So you want to help them flourish. Help them. And wherever raw materials are required, we have reduced the rates so that because basic raw materials can come in and our industry can start growing. Okay. During the pandemic, we found that we were dependent on a certain few countries alone. That's right. It was possible when the time when things were where the industry was doing well. Yeah. But then that was an eye-opener to us. And even the PPE kits or the ventilators. Correct. Those are some of the examples that we had to suddenly rush in. And credit goes to our entrepreneurs, to our manufacturers, that they rose to the challenge. Then we said, why not? If we give them the right atmosphere and we give them the protection they need, they can do wonders, and they have done it.
Yeah, but Atmanirbhar Bharat, many a times, people, it's kind of a misnomer. People tend to see that as if it is a kind of a protectionist move towards the Indian economy, and we won't, let, foreign players come. It is actually not that, No, isn't it? it is not that at all. We are calibrating the needs of the country, Okay. and wherever we need inputs, we are allowing them to come in. Okay. There is no such, but we want to ensure that the country is able to manufacture quality products, Okay. make champion sectors, and they are able to export and bring more revenue to the country, to the nation. Yes. मिस्टर अजीत कुमार, एक तो शायद काफ़ी राहत भरी खबर आपके लिए भी होगी जब आंकड़े देते हैं कि जीएसटी के जो राजस्व का आंकड़ा है वो एक इतना बढ़िया है, और शायद मेरा भी अपना निजी अनुमान भी ये है कि अभी चूंकि हमारे पास ये जो आंकड़े हैं वो दिसंबर के बाद के हैं, जब हम जनवरी के, फरवरी के और मार्च के आंकड़े देखेंगे तो कितने आशावान होंगे आप कि ये 1,20,000 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चूंकि जिस तरह से सरकार का सपोर्टिव या जो उनको सारे क्षेत्र को एक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में स्वतः ही इसके पीछे बहुत बड़े रीज़न नहीं, लेकिन जो निरंतर मेहनत की गई है उसका जो फल है वो हमको इन दिनों में देखने को मिलेगा। हाँ जी, देखिए ये साल हमारे लिए बहुत कठिनाई के साल थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि हमें इस साल कोई टैक्स नहीं बढ़ाना है, परंतु ये हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए रेवेन्यू तो चाहिए जी। तो हम उसको कैसे लाएं? तो जैसे मोदी साहब ने बताया कि हमने ये तय किया कि हम अब जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टैक्स पेयर सर्विसेज हैं, उसको उनको बढ़ाएं और अच्छा सर्विस दें, और जो भी टैक्स पेयर हैं जो गलत काम कर रहे थे उनको सक्सीड ना करने दे। इससे दो लाभ होता है, एक तो टैक्स बढ़ेगा और दूसरा जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसका भी आत्मबल बढ़ेगा कि वो सही काम कर रहा है और उसका कंपटीशन घटेगा। नहीं तो अगर कोई 18% वाला ड्यूटी वाला आइटम को ड्यूटी नहीं पे कर रहा है, गलत तरीके से पे कर रहा है, तो नेचुरली जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसके लिए उसको बहुत चैलेंज पड़ता हो जाएगा जी। इसीलिए हम देख रहे थे कि हर महीना टैक्स बढ़े आ रहा है। और मैं आपको ये भी सलाह दे दूं कि इस महीने में, अभी जो जनवरी का महीना है, अभी हम पूरा रूप से हम इस पैंडेमिक से बाहर नहीं आए हैं। बिल्कुल। और कुछ सेक्टर, सर्विस सेक्टर हैं, जैसे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे एविएशन सेक्टर हो, जहाँ पे इस जो अभी भी अफेक्टेड है, तो आने वाले महीने में हमें लगता है कि ये सेक्टर भी उभर के आएंगे, तो निश्चित तौर से हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। और जो हमने अभी ये कॉपरेशन स्टार्ट किया है अपने मित्र के डिपार्टमेंट के साथ, सीबीआईसी के, सीबीडीटी के साथ, उसे हमें लगता है कि हमारा जो रेवेन्यू है निश्चित बढ़ेगा। Yeah, Mr. Modi, to talk about the announcements in today's budget as far as direct taxes are concerned, provisions like giving exemptions to senior citizens above the age of 75 years, that they need not file income tax, and also bringing down the period of reopening a case from 6 to 3 years, faceless assessment, and a tribunal also going on the same lines. What would you say? Are these all provisions aimed at bringing in more transparency and ease for the taxpayer? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अपनी चर्चा हो रही थी कि एक माहौल बनाने की बात है। एक माहौल ऐसा जिसमें कि करदाता खुद स्वयं को प्रेरित कर सके कि मैं अपने कर का निष्पादन सही तरीके से कर पाऊँ। उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ उपलब्ध करानी है उनको। अब आज जैसे कि आपने रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की बात कही, पहले प्रावधान था कि 6 साल तक आप उसका असेसमेंट रीओपन कर सकते हैं। एक आदमी में अनिश्चितता का दौर था तो कि तलवार हमेशा लटकी हुई है, तलवार हमेशा लटकी हुई है कि मेरा मामला खत्म होगा या कभी भी खुल सकता है जी। तो उसी को एक विराम देने की कोशिश की गई है। और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो सोचने वाली है कि 3 साल तक की तो हमने अवधि कम कर दी है जी। दूसरा एक उसकी जो एक मॉनेटरी लिमिट है वो भी 50 लाख कर दी कि भाई 50 लाख तक का टैक्स इवेजन होगा तो ही हम जाएंगे और 10 साल तक जाएंगे। अगर उससे छोटा होगा तो नहीं, उससे कम होगा तो नहीं। और उसमें भी एक और इनबिल्ट फिल्टर लगाया है कि उसमें भी उसकी जो परमिशन है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स देगा। मतलब हर तरह से उसको एक बाधित करने की कोशिश की है कि बिल्कुल
अति आवश्यक हो कि ये बिल्कुल क्लियर कट केस है, उसी को ही टच करना है। जी जी, मगर ये प्रोविजन शायद उन पे लागू नहीं होंगे जहाँ पे कोई सर्चेस या कोई सीजर्स या उस तरह सीरियस के टैक्स फ्रॉड कैरी आउट केसेस किए हों गए थे। या सर्च के केसेस हों, उनमें ये चीज लागू नहीं या होगी। सर्वे भी आप लोग जो इनकम टैक्स वो डिपार्टमेंट यूज करती है, सर्वे वर्ड, या हम एक कहीं चीज सर्वे कहें किया कि जहाँ गया। इंट्रूसिव एक्शन हुआ है। ओके मोटे तौर पे ये माना जाए कि जो करदाता का भरोसा है सरकार के और विभाग के प्रति, वो एक मित्रवत व्यवहार हो जाए और करदाता का भरोसा पूरी तरह से जीता जाए कि निश्चित तौर पे आप अगर एक भारत सरकार को या सरकार में अपनी कर दे रहे हैं तो आप एक महत्वपूर्ण एसेट हैं सरकार के लिए भी, और आप इस बात के लिए गौरवान्वित हो सकते हैं। हम इस चीज को पूरा मानते हैं कि हर करदाता राष्ट्र निर्माता जी, तो उसके लिए ये जरूरी है कि अगर वो एक कदम चल के अपना दायित्व निभा रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उतना ही साथ चलें और एक कदम और आगे चलें। क्या ये माना जाए कि क्योंकि आज एक आमतौर पे बजट से एक जनता के बहुत बड़े भाग को आयकर की छूट का बहुत बेसब्री से इंतजार होता था, तो उस तरह से अगर उन्होंने छूट का लाभ नहीं दिया तो लेकिन इस तरीके से बहुत सारे लाभ दे दिए जो एक शायद लंबे समय के लिए और बहुत बड़ी चिंताओं को दूर करके सरकार ने उनका भरोसा जीतने की कोशिश की है। लाभ कोई नया नहीं दिया है, ये बात मैं मानता हूँ, बट जो पुराने बजट में भी कुछ लाभ दिए गए, जैसे कि एक एनहांस्ड डिडक्शन था अफोर्डेबल हाउसिंग के चलते, 1.5 लाख का डिडक्शन एक्स्ट्रा दिया गया था। या जैसे कि आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, उसकी समय सीमा जो 31 मार्च 21 तक ख़त्म होने वाली थी, या स्टार्टअप है नहीं लगा पाया, पेंडेमिक टाइम में कोई किसी तरह की कठिनाई रही, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ नितांत आवश्यक था वहाँ हमने उसकी समय सीमा बढ़ा के 1 साल और आगे कर दिए, यानी 31 मार्च 22 तक। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई नया लाभ नहीं मिला है, पुराना लाभ है, उसका जो पूर्ण फायदा है वो विस्तार करने से उसको मिल जाएगा। Yeah, but Mr. Modi will also agree that over the past so many years, that savings limit has not been enhanced from 1.5 lakhs. So that is stagnant. You know, we have seen how the economy grew in the last 7-8 years, and you also had the seventh Central Pay Commission being implemented, which led to increase in salaries. But that saving limit has not been increased. मैं आपको फिर एक अपने पुराने साल के बजट के टाइम जो अपना एक डिस्कशन हुआ था उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक सरकार की नीति जो है वो इस तरह से उभर रही है कि जितने भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फेज्ड मैनर में कम होते चले जाएं, और एक अच्छी दर, एक कम दर जो है करदाता को मिले। That will lead to better compliance. That would lead to better compliance. सरलीकरण कहा जाए जिसको, कि बिल्कुल सरल कर दिया जाए कि आपको बहुत सारे इसमें ये बचा लें तो ऐसे बच जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मतलब उसको छड़े में क्यों पड़े? बिल्कुल सीधे सीधे आपकी अगर इतनी आय है, जैसे कि हम लोग आमतौर पे भारतीय उपभोक्ता या भारतीय करदाता बहुत बार इस तरह के उदाहरण देता है कि जी हमारे यहाँ से दूसरे देशों में कर का प्रणाली इतनी सरल है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। कहीं ना कहीं सरकार ने उस भावना को समझा और उसको अपने उसको क्रियान्वयन करने की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की गई है। नहीं, उसी में आपको अभी ज़्यादा समय न लेते हुए आपको एक उदाहरण देता हूं कि इस साल अभी रिटर्न फाइलिंग हुई, और अगर पिछले एक्सपीरियंस से हम चलें तो उसको रिफंड मिलने में कई साल लग जाते थे। अब आज उसने रिटर्न फाइल किया है और 2 दिन बाद में उसके बैंक अकाउंट में उसका रिफंड बोल रहा है। ये बहुत बहुत तो बड़ी बात है। मतलब सिर्फ कहना ही नहीं, उसको करके दिखाना, और वो मूर्त रूप से करके दिखाने के बाद में उसका जो एक विश्वास पैदा होना, निश्चित तौर पे तो वो डेफिनेटली कर व्यवस्था से और अच्छी तरह सुदृढ़ तरीके से जुड़ेगा। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये तो मानते हैं, क्योंकि चाहे वेतनभोगी करदाता हो या चाहे छोटा व्यापारी करदाता हो, उसको अगर अपना बकाया बहुत जल्दी से मिलता है तो कहीं ना कहीं वो उसको निवेश भी दोबारा से करेगा और कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं ना कहीं सिस्टम में भी आ जाएगा। Yeah, exactly. And Mr. Ajit Kumar, what would you say as far as rationalization of taxation is concerned, especially with the focus on indirect taxation? Can we expect, in times to come, although GST decisions are taken by the council, can we expect some kind of rationalization in GST, and also those commodities which are outside the ambit of GST, like alcohol, like petrol and diesel, they also come into the ambit? As far as you would have already seen the case of customs, a lot of work has gone in the past few years, and around 4,000 lines on the customs side we have rationalized
the tax structure. So the intention of government is to ensure that the taxes are simple and that they follow a certain pattern. There is no inversion of duty, so that production can be smooth. That same philosophy of government is also there on the GST side. But then the mechanics are slightly different. We have to go through the GST council. Then the last council No, but met. what can the corporate India expect? Wherever there is an inverted duty structure, will the government intervene to set it right? Yes. So the last council meeting also, this matter had come up and it was discussed. It had come up for discussion. Only it was felt that it's not the ripe time now to do it. I'm sure in the next couple of meetings that will take place, these issues will come up for discussion. राइट राइट तो जो एक भारतीय जनमानस की या उद्योग जगत की कई बार इस तरह की मंशा होती थी या मांग होती थी कि अगर हम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो जीएसटी की दरों को तार्किक किया जाए, उसमें राहत दी जाए, क्या फिलहाल उस तरह की राहत दे पाना संभव है सरकार के लिए? देखिए, हमने जब से जीएसटी लागू किया गया है, हमने जो रेट्स है हम बहुत कम किया है. ऑलरेडी अभी जो जनरली जो रेट है, एवरेज रेट जो है सिर्फ 11.5% है. जी. तो जो इससे पहले जो रेट होता था वो काफ़ी हाई होता था. हाँ, अभी ये मांग आई है कि जो 5 रेट है उसको बंच करके 3 रेट का किया जाए. उस पर चर्चा हो रही है और अगर वो भी आ जाती है तो बहुत ही सुविधा और सरल हो जाएगी. Yeah, and before we wind up, Mr. Modi, a quick comment on today's budget provisions and especially with focus on direct taxes. मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही उम्दा और हिस्टोरिक बजट है और बहुत ही सही दिशा में ले जाने वाला बजट है. जी जी, and we can expect this good work and impetus to continue in times to come. कहीं ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से. चलिए मिस्टर मोदी, बहुत सरल शब्दों में जो कर का विभाग होता था बकड़ा काफ़ी जो जिससे डरा करता था, आम करता था, आपने आपसे इस डर को दूर किया. फिलहाल आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और इतनी सरल भाषा में अपनी बातें बताई. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अजीत कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. So that's it in this special program on the budget. Thank you so much for joining us. Goodbye. Union Budget 2021-22. नमस्कार,